BLMS. I hope everything is fine. बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स इस चैप्टर के बाद हमने स्टार्ट किया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके अलावा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन of first members of the hydrocarbon, that is alkane के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिस्कशन किया था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स, और आज के क्लास में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, इस बारे में डिस्कस करेंगे। Now general characteristics of alkanes. First, physical properties. The physical properties, that is boiling points, melting points, solubility, density, etc. of hydrocarbons depend upon the intermolecular forces of attraction. Since alkanes are almost non-polar and therefore their molecules are held only by weak van der Waals forces, which mainly depend upon the size and the structure of the molecule. Now, state of alkanes, due to weak forces, the alkanes up to 4 carbon atoms. That is methane, ethane, propane and butane are colorless, odorless gases. First we see that due to weak forces, the alkanes up to 4 carbon atoms, methane, ethane, propane and butane are colorless, odorless gases. The next 13 members from C5 to C17 are colorless, odorless liquids. Alkanes from C18 onwards are colorless and odorless solids. Now density. The density of alkanes increases very slowly with the rise of molecular mass until it decomposes. Until the density of the alkane increases very slowly with the rise of molecular mass until it becomes constant about at 0.8. Thus, all alkanes are lighter than water. Now, solubility. The alkanes are non-polar in character and are generally insoluble in polar solvents such as water, but soluble in non-polar solvent like ether, carbon tetrachloride, benzene, etc. The solubility decreases with increase in molecular mass. However, the liquid hydrocarbon themselves are a good non-polar solvent for other non-polar organic compounds. Now, boiling points. The boiling points of straight chain or N-alkanes increases regularly with increasing number of carbon atoms. In general, the boiling point difference between two successive members of the series means homologous series, except of the first few members, is about 20 to 30 degrees centigrade. Among the isomeric alkanes, the normal isomer has a higher boiling point than the branched chain isomer. Greater the branching of the chain, lower is the boiling point. Now, physical constant of some alkanes, methane, formula ये है. Boiling points in Kelvin, methane का होता है boiling point 111.5 Kelvin and melting point 90.5 and density 0.4240. Ethane boiling point 184.4. Molecular mass बढ़ा तो boiling point भी बढ़ गया, melting point 101 and density भी increase कर गई 0.5462. Propane की 230.9 boiling point हो गया, melting point यहाँ decrease कर गया ये 85 और
लेकिन डेंसिटी बढ़ गई। एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट इसका 272 और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट 134, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। डेंसिटी थोड़ा कम हो गई इसकी 0.5788। इसी तरह एन पेंटेन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा और उसके बाद डेंसिटी भी बढ़ी। एन हेक्सेन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डेंसिटी भी। तो ये कुछ फिजिकल कांस्टेंट थे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग boiling point values of various isomers of butane and pentane justify the above statement. N-butane boiling point 272.5 Kelvin and N-pentane 309.1 नॉर्मल है। आइसोब्यूटेन का लो होगा बॉइलिंग पॉइंट, आइसोब्यूटेन एन ब्यूटेन के मुकाबले में 261.0, जबकि एन पेंटेन के कंपैरिजन में आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 301, यानी कम है। उसके बाद नियोपेंटेन का और कम हो जाता है 82.5 केल्विन। The trend in boiling points can be explained in terms of intermolecular, that is dipole-dipole forces of attraction. These forces act along the surface of the molecule and their magnitude increase with increase in surface area. As the molecular size increase in the series, the surface area increase, and with that the boiling points also increase. This has been depicted in figure 8.3. Boiling points and number of carbon atoms. तो इस तरह से number of carbon atoms बढ़ता है तो boiling point increase करता जाता है. Now melting point. मेल्टिंग पॉइंट में उस तरह से एक जो सीरियली एक लगातार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कहीं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर बढ़ गया, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ गया। इस तरह से इस तरह का ग्राफ मिलता है। The N-alkanes have the most extended structure and larger surface area in comparison to branch chain isomers having compact structure, as the shape approaches that of a sphere in the branch chain isomers. Thus, intermolecular forces are weaker in branch chain isomers. Therefore, they have lower boiling points in comparison to straight chain isomers. Now, melting point. The melting points of alkanes do not follow a very smooth gradation with the increase of molecular size. Graph में देखा है अभी. Alkanes with even number of carbon atoms have higher melting point than the next lower and next higher alkanes having odd number of carbon atoms. It is explained by the fact that alkanes with an odd number of carbon atoms have their end carbon atom on the same side of the molecule, and the even numbered carbon atom alkanes have their end carbon atom on the opposite sides of the molecules. Thus, alkanes with even number of carbon atoms are closely packed in such a manner as to permit greater intermolecular attraction and therefore have slightly higher melting point. यानी odd number of carbon atoms में दोनों साइड एक तरफ होता है ये कार्बन एटम, जबकि even number में opposite side में होता है. Now, chemical properties. Alkanes are quite inert towards common reagents such as acid, alkalis, oxidizing and reducing agent, etc. at ordinary condition because of their saturated character. Alkanes are saturated compounds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is small. Carbon की 2.6 है और hydrogen की 2.1. And the CH bond is almost non-polar.
The C-C bond is completely non-polar. Therefore, the polar reagents like electrophile and nucleophile do not find reaction sites. Reaction sites means electron rich or electron deficient on alkane molecules. The C-C bond and CH bonds are strong sigma bonds and cannot break under ordinary conditions. At high temperature, energies of collisions are sufficient for breaking CH and CC bonds, resulting the formation of free radicals. Like this, इस तरह से एल्केन ब्रेक होकर के एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर का चला जाता है दोनों पार्ट पे और ये फ्री रेडिकल बनता है. However, alkanes do show some reaction under special conditions. Some of important reaction of alkanes are here. However, some of the important reaction of alkanes. First is substitution reaction. These are the most characteristic reaction of alkanes. First is halogenation. When the alkanes are treated with halogen, particularly chlorine or bromine, in presence of sunlight or ultraviolet light, or at elevated temperature at 523 to 573 Kelvin, the hydrogen atoms of alkanes are successively replaced by halogen atoms. This process is known as halogenation. The extent of halogenation depends on the amount of halogen used. For example, methane undergoes chlorination in excess of chlorine in presence of ultraviolet light, giving the mixture of methyl chloride, methylene chloride and chloroform and carbon tetrachloride. तो successive reaction होता है HV ultraviolet light में methane chlorine से reaction करके methyl chloride, then react with chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light. It forms methylene chloride, which is known as dichloromethane, and आगे reaction बढ़ता है तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म बनता है. उसके बाद एट लास्ट चारों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं CH से और कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है. For chlorination, reactivity of 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen is in the ratio. 1 degree, 2 degree, 3 degree के रिएक्शन का रेशियो होता है 1:3.8:5. On the basis of relative reactivity of different types of hydrogen, the percentage of the product in mixture can be calculated. इस तरह से it has 6 primary hydrogen atoms and 4 secondary hydrogen atoms. तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम वो होंगे जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े होंगे, उसके बाद दूसरे तीसरे जो है वो सेकेंडरी टर्शियरी. अब दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे. ए में रिलेटिव अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, एंड इन दिस केस रिलेटिव अमाउंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी. नाउ टोटल अमाउंट दोनों का हम ऐड कर देंगे तो परसेंट ऑफ ए जो अमाउंट आया है ए का उसको डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट इनटू 100 और परसेंट ऑफ बी इस तरह से निकालेंगे. The relative reactivity of 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen to bromination is 1:82:1600. Ethane and higher alkanes reacts with chlorine in similar way and all possible substitution products are obtained. However, propane and higher members contain hydrogen atoms of 2 or 3 types, that is primary, secondary or tertiary, which differ in reactivity. The order of reactivity 3 degree hydrogen is more reactive than 2 degree and 1st degree. Propane gives 2 monochloro substituted product on chlorination. Propane chlorination से 2 substitution product. This is chloropropane and this is
2-chloropropan. ये 45% होता है और 2-chloropropan 55%. Here the primary hydrogen is substituted. This is the primary hydrogen and here secondary hydrogen is substituted क्योंकि ये secondary carbon से hydrogen यहाँ पे, this is the secondary carbon, this is primary carbon. यहाँ पे secondary carbon से hydrogen जुड़ा था इसलिए वो secondary hydrogen. The bromination proceed in almost identical number but the reaction is less vigorous than chlorination. Iodine does substitute as the reaction is very slow and reversible, but iodination can occur in presence of an oxidizing agent such as iodic acid or nitric acid, etc., which decompose Hi into iodine. Now CH4 reacts with iodine. This is reversible reaction and forms CH3I and Hi. Now 5Hi reacts with iodic acid HiO3 to give iodine and 3H2O, and like this HNO3 reacts with Hi, hydrogen iodide, to give nitrogen dioxide, water and iodine. तो किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आयोडीन का रिएक्शन एल्केन से होता है. Halogenation of alkane proceeds through free radical mechanism. Now, chlorination of methane. The chlorination of methane in the presence of ultraviolet light is an example of free radical substitution, that is homolysis. Mechanism of the chlorination of methane. First step is initiation step. The reaction is initiated by the breaking of chlorine molecule into chlorine-free radical in presence of ultraviolet light. This is known as homolytic fission. In presence of HV or heat, two free radicals are formed. This is chain initiation step. Second is chain propagation step. The chlorine-free radicals attack methane molecule and form methyl-free radical and HCl. This is chain propagation. अब ये methyl radical chlorine से react करता है तो chlorine free radical बनता है. फिर ये chlorine free radical इससे reaction करके methyl free radical बनाएगा. Each of the methyl free radical in turn react with chlorine molecule to form methyl chloride, and at same time chlorine free radical is produced like this. This is chain propagation. The chlorine free radicals can react with fresh methane molecule as step second or methyl chloride. इस तरह से methyl chloride या methane free radical से react करके ये CH2Cl free radical and chlorine बनाता है. अब ये सब क्या है? Chain propagation step. chain reaction की आगे बढ़ती जाती है. Now CH2Cl methylene chloride free radical would react with another molecule of chlorine to form dichloromethane. This process may extend further till all the replaceable hydrogen atom in the methane have been substituted by the chlorine. These are the chain propagation step. अब यहाँ क्लोरीन इससे रिएक्शन करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है. अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इससे रिएक्शन करता है जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ और ये फ्री रेडिकल बना रहा है. These are the chain propagation step. Now CHCl2 react with chlorine. This is free radical. जहाँ जहाँ ये डॉट बना है वो फ्री रेडिकल है. अब ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, फिर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए और यहाँ पे जा करके फिर ये फ्री रेडिकल बनाता है और एट लास्ट सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल से. तो these are the chain propagation step. Now termination step. The chain of reaction initiated and propagated as shown above may be terminated if free radicals combine among themselves without giving rise to any radical. जब free radical खुद combined होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं तब ये आगे रिएक्शन में रिएक्शन रुक जाता है. ClCl क्लोरीन बन गया, CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन गया, 2 methyl free radicals join to form ethane. These are the chain termination step.
Now, fluorination can be achieved without violence. When alkane is treated with fluorine diluted with an inert gas or by the action of inorganic fluoride, such as arsenic fluoride, antimony fluoride, HDF, HDF2, HG2F2, etc., on bromo or iodo derivatives. The reaction is like this. Ethyl iodide reacts with the mercury fluoride to forms 2C2H5F and HgI2, and this Hg2F2 reacts with ethyl chloride to gives fluoroethane and Hg2Cl2. This reaction is called Schwarz reaction. Now, iodo compounds are obtained by treating chloro-bromo derivatives with sodium iodide, concentrated solution in acetone. Iodo compounds are obtained by treating chloro or bromo derivative with sodium chloride, that is concentrated solution in acetone. It is a halide exchange reaction, that is Fring-Klestin reaction. Ethyl bromide reacts with excess of NaI in presence of acetone to form ethyl iodide and NaI. This is Fring-Klestin reaction. Now, point to be remembered. Relative reactivities of hydrogen on alkane follow the following order. Most reactive is fluorine, then bromine, and then less reactive is iodine. The reactivity decreases with decrease in the electronegativity of the halogen. The replacement of hydrogen atom by halogen follows the following hydrogen. Tertiary hydrogen में सबसे तेज रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, एट लास्ट मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना सबसे मुश्किल होता है. Halogenation takes place in presence of sunlight, ultraviolet light, or in dark at high temperature at 523 to 6773 Kelvin. The reaction may be initiated by peroxide, that is dibenzoyl peroxide at dark. Now, tetraethyl lead PbC2H5 initiate the chlorination of methane in dark at 423 Kelvin. Now, nitration. Nitration is a substitution reaction in which a hydrogen atom of alkane is replaced by nitro group like this. RH, fuming HNO3 reacts with fuming HNO3 at high temperature to form nitroalkane and water. Lower members do not react with concentrated nitric acid at ordinary temperature, but long chain members on heating with fuming nitric acid yield nitroalkanes like N-hexane reacts with fuming nitric acid at 673 Kelvin to form nitrohexane and water. However, when a mixture of vapors of an alkane and nitric acid is heated at 673 to 773, nitroalkane is formed readily. This is known as vapor phase nitration. By this process, lower as well as higher alkanes can be converted into nitroalkanes. Now, vapor state में दोनों ही चीजें होंगी, fuming nitric acid and methane. At 723 Kelvin, it forms nitromethane and H2O. In alkanes having two or more carbon atoms, there is always a possibility that C-C bond may break at high temperature and a mixture of nitroalkane is formed. For example, in the nitration of propane, the following products are obtained. Propane in presence of fuming HNO3 at 723, तो vapor phase में आ जाएंगे.
तो इतने प्रोडक्ट मिलेंगे, 25% नाइट्रोप्रोपेन, 40% नाइट्रोप्रोपेन ये है, एंड 10% नाइट्रो इथेन, एंड उसके अलावा नाइट्रोमीथेन भी फॉर्म होता है. हायर एल्केन्स yield even more complex mixtures of alkane containing higher alkanes yield even more complex mixtures. Alkanes containing neoskeleton are easily oxidized with HNO3 to form carboxylic acid and no nitro compounds. So neopentane यानी क्वार्टरनरी कार्बन है यहाँ पे, ये HNO3 से इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एथेनोइक एसिड बनाता है, साथ में CO2 और H2O इज आल्सो फॉर्म. नाउ सेकंड सब्स्टिट्यूशन या थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये सल्फोनेशन. द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H is known as sulfonation. Lower alkanes do not undergo sulfonation, but higher members from hexane onwards are sulfonated slowly when treated with fuming sulfuric acid at about 673 Kelvin. Now, alkane with fuming sulfuric acid in presence of SO3, prolonged heating यानी देर तक हीट किया जाएगा तो एल्केन सल्फोनिक एसिड बनता है. फॉर एग्जांपल हेक्सेन व्हेन रिएक्ट्स विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड at the temperature 675 Kelvin in presence of sulfur trioxide, it forms hexane sulfonic acid and water. However, lower members such as propane, butane, pentane, etc. react with SO3 in vapor phase to form sulfonic acid. Ease of replacement of hydrogen atom is 3 डिग्री जो है जल्दी रिप्लेस हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री में और टाइम लगेगा. नाउ ऑक्सीडेशन, सेकंड रिएक्शन ये था. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह के थे. उसके बाद है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन. नाउ कंबस्शन और कंपेटिटिव ऑक्सीडेशन. Alkanes readily burn with non-luminous flame in excess of air or oxygen to form carbon dioxide and water. The combustion of alkane is an exothermic reaction. That is, large quantity of heat is evolved and heat of combustion increases with molecular weight. It forms the basis of the use of alkane as a fuel in internal combustion engine. The cooking gas, which is often called LPG. LPG is liquefied petroleum gas, is a mixture of propane and butane. CnH2n+2 reacts with oxidation या combustion जब इसका कराते हैं तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हीट प्रोड्यूस होती है. एग्जाम्पल मीथेन गैसियस स्टेट में रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और 213 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एथेन का ऑक्सीडेशन होने पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और साथ में 746 वाटर वेपर बनेगी. है यहाँ पे वाटर लिक्विड है, ये वेपर में है और 746 किलो कैलोरी पर मोल जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो दोनों ही लिक्विड है, नॉट वेपर्स. नाउ इनकम्प्लीट कंबस्शन और ऑक्सीडेशन. When alkane is burned in insufficient supply of oxygen, carbon monoxide or carbon black may be formed. Hydrocarbon, when heated in limited value of, in presence of limited value of oxygen, it forms carbon monoxide and H2O. And इन लिमिटेड O2 के साथ बर्न करने पे दो पोजीशन होती है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ मीथेन को गर्म करने पे कार्बन ब्लैक बनता है. कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिंटिंग इंक, ब्लैक
paints, polishes, and as a filler in rubber vulcanization. Now reaction with steam. Methane reacts with steam over nickel suspended on alumina at 1073 Kelvin. Hydrogen gas is formed with carbon monoxide. Methane reacts with methane in presence of nickel or alumina at 1073 Kelvin. It forms carbon monoxide and hydrogen. Now, catalytic oxidation. Catalytic oxidation, lower alkanes undergoes restricted oxidation in presence of metallic catalysts such as copper at high temperature and pressure to form alcohols, aldehyde, ketones, and acids. When methane and oxygen mixed in the ratio of 9:1 are compressed to 100 atmosphere and pass through a copper tube at 473 Kelvin, methyl alcohol is formed. Methane, oxygen at 9:1 ratio होगा दोनों का, कॉपर ट्यूब में 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 473 केल्विन पे कॉपर ट्यूब से पास की जाती है, तो ये मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. This is the industrial method for the manufacture of methyl alcohol. When a mixture of methane and oxygen is passed over heated molybdenum oxide under pressure or in air at 543 Kelvin, it is oxidized to formaldehyde. Methane reacts with oxygen in presence of molybdenum oxides at 543 Kelvin at 100 atmospheric pressure. It forms formaldehyde and H2O. Both reactions are important. Higher alkanes are oxidized to carboxylic acid in presence of manganese stearate or silver oxide. Higher alkane oxidized at 373 to 433 Kelvin at 373 to 433 Kelvin in presence of manganese stearate, it forms carboxylic acid like this. And higher alkane oxidized in presence of Ag2O, it forms carboxylic acid of this type. A controlled partial oxidation of methane at 1773 Kelvin yield acetylene. Methane heated at 1773 Kelvin with oxygen, it forms ethine, that is acetylene. Carbon dioxide and hydrogen also produced. Now chemical oxidation. Alkanes are usually not affected by oxidizing agents like potassium permanganate or potassium dichromate. However, alkanes having tertiary hydrogen are oxidized by these oxidizing agents to corresponding alcohols. So this is the secondary hydrogen है यहाँ पे 2-methyl propane or isobutane when oxidized in presence of potassium permanganate. Alkaline potassium permanganate, it forms tert-butyl alcohol or 2-methyl propane 2-ol. Now thermal decomposition or fragmentation, that is pyrolysis or cracking. Thermal decomposition, or it is known as fragmentation, or which is known as pyrolysis or cracking. The decomposition of compound by heat is called pyrolysis. When pyrolysis occurs in alkane, the process is termed cracking. The alkanes on heating under high temperature in absence of air are broken down into mixture of lower alkanes, alkene and hydrogen.
During cracking of alkanes, either rupture of carbon-hydrogen bond or rupture of carbon-carbon bond occurs by a free radical mechanism takes place. The rupture of CH bond is catalyzed by the oxides of chromium, vanadium, molybdenum, etc. And the rupture of CC bond is catalyzed by silica, alumina, zinc oxide, etc. Following are the sum of examples of pyrolysis. Pyrolysis के एग्जाम्पल है C3H8 हायर एल्केन. When पहले हम मीथेन पे आते हैं. मीथेन को 1300 to 1500 तक हीट किया जाएगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा. और इथेन को 700 to 800 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और एंड CrO3 एंड Al2O3 के साथ हीट करेंगे तो ये एथीन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. हायर एल्केन दैट इज प्रोपेन व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स, यहाँ पे CH फिजन होगा तो प्रोपीन बनता है और यहाँ पे CC फिजन होगा हीट करने पे तो इथेन बनेगा. इसी तरह हेक्सेन, इसको हीट करेंगे 773 केल्विन पे तो हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन. और दूसरा जो है और टेम्परेचर जो है मिडिल टेम्परेचर पे ब्यूटीन प्लस इथेन में ये क्रैकिंग हो जाएगी इसकी. और तीसरे तरह का प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन, एथीन एंड मीथेन. अदर एग्जांपल ऑफ ऑक्टेन की क्रैकिंग जब करते हैं तो these products are formed. This is butane and butene. उसके अलावा ये प्रोडक्ट हैं, इसमें ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं. उसके बाद ये डबल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड देख सकते हो दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन पायरोलिसिस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. The pyrolysis or cracking of alkanes involves breaking of CC and CH bonds and occurs by free radical mechanism. It is of great importance to the petroleum industry. Now, isomerization. The process of conversion of one isomer into another isomer is called isomerization. Straight chain alkanes, when heated in presence of anhydrous aluminum chloride and hydrochloric acid or anhydrous aluminum bromide and hydrobromic acid at about 523 Kelvin under a pressure of 35 atmosphere are converted into branch chain isomer. The reaction is this. Reaction N-butene in presence of aluminum chloride and concentrated HCl heated at 523 Kelvin and 35 atmospheric pressure, it forms iso. So isomers में convert हो गया. This reaction is known as isomerization. 2-methyl pentane, इसको अगला है ये. इसका भी रिएक्शन AlCl3 प्लस कंसंट्रेट HNO3 HCl के साथ हीट करते हैं तो ये आइसोमर में इस तरह कन्वर्ट हो गया. दिस इज 2,3-dimethyl butane. The branch chain alkanes have lower boiling point than straight chain, hence isomerization is important for increasing the octane number of particular petroleum fraction. Now, aromatization. The conversion of aliphatic compounds into aromatic compound is known as aromatization. Alkanes having 6 to 10 carbon atoms are converted into benzene or its homologous at high temperature in presence of catalyst. Hexane, N-hexane, when heated with chromium oxide and aluminum oxide or alumina at 873 Kelvin and 15 atmospheric pressure, it converted into benzene. This is aromatic compound. So this reaction is known as aromatization. यानी
एलिफेटिक कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया गया और साथ में हाइड्रोजन। इसी तरह ये N-हेप्टेन व्हेन हीटेड विद क्रोमिक ऑक्साइड एंड Al2 ऑक्साइड at 873 Kelvin, it converted first into methyl cyclohexane and finally it loses two hydrogen and forms toluene. तो इस तरह से ये लास्ट रिएक्शन था एरोमेटाइजेशन। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिए गए, दिखाए गए सब सामने और बताए भी गए। इसके बाद हम अगले क्लास में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एल्काइन और एल्कीन। इन पे हम अगले क्लास में, तो कंप्लीट स्टडी ऑफ एल्केन यहाँ के पिछले क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था और आज के क्लास में हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेन बताया है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन बताई है जनरल। इसका स्पेशल मेंबर है मीथेन, एथेन, जिसके बारे में अलग से इंडिविजुअल स्टडी हमने अलग वीडियो में भेजी है, तो बताई है, जिसको आगे उसके बारे में भी बताएंगे।